find some specific service and take actions, right? Some specific service, like any service, if you want to check, you just check what is the status of the service, and based on the status, if you want to, if it is stopped, if you want to start it, you can start it. If it is already running, right, and you want to stop it, you can stop it. Or if there is any issues and you want to terminate or kill it, then you can terminate it. So it's everything whatever will do based on the status of the service. So first thing is we have to check the status of the service, right? So this is what the program, and we are going to write the code for this. Okay. So write a shell script to find a specific service and take actions. And it should ask for user input whether to start, stop or input, terminate. So कौन करिबा ना हमें फर्स्ट कौन करिबा हमें लिखि दबा रिक्वायरमेंट हमर कोन प्रीरिक्विजिट्स हमर दरकार. तो फर्स्ट हमें कौन करिबा चेक करिबा स्टेटस, राइट. फर्स्ट check the status of the service. Okay, check the status of the service. Then what we'll do, we'll do the next course of actions. What we need to do, if it is running, what you need to do, actions to be taken, like whether we have to stop it or terminate it, right? Either stop it and terminate it, right? Actions to be taken. Another conditions will take if it is not running, right? If it is not running, what actions we can take? Either start it, only start, right? Terminate will not be there because it will not be running. The process will not be, service will not be running, right? So, and another thing, if it is running and showing some exception, what actions you need to take, right? Actions to be taken. Okay, so what we'll do here, actions will be taken. So what we have to do, we have to terminate the process, right? You have to terminate the service. Then after we terminate the service, what you can do, you can troubleshoot the issue, right? Troubleshoot the issue, right? Then start the service. This troubleshoot the issue and start the service, that will be done after you troubleshoot and fix the issue, right? Troubleshoot and fix the issue, then you can start the service. This one will not do because we are not going to troubleshoot anything in the shell script. So this is what we are going to achieve it, right, in our shell script. So for that, what we are going to do, some prerequisites we need to write it down for this particular project. Our thing is we need a service, right? So for that, what we'll do, suppose we'll take Apache service. We'll just install one Apache service and work on that. Okay. So let me first connect to the Linux server. तो आमे फर्स्ट कौन करिया, Linux सर्वर को कनेक्ट करिगरी आमे जदी तमरो कोनसी Linux सर्वर नाही जेमति कि रूपा तमे गोटे C2 इंस्टेंस नहीं परिबो, आइदर Amazon Linux वा किछि भी Linux machines को नबो.
सेठी तो कौन कॉल करिवो गोटे अपाची सर्वर इंस्टॉल करिवो तो मु तुम बतै दोछि केमती अपाची सर्वर इंस्टॉल करिवो हमरो ए पर्टिकुलर जो शेल स्क्रिप्ट हमें लिखिबा ता पय गोटे अपाची सर्वर हमको दरकार काना तार स्टेटस हमें चेक करिवो राइट हम पाखे स्टेटस चेक करिया पे अपाची सर्वर तिबा दरकार फर्स्ट लेट मी चेक वेदर द अपाची सर्वर इज इंस्टॉल्ड और नॉट राइट तो हमें कौन करिवो तार कमांड हैला सिस्टम ctl system control command ctl command to check the status तो अपाची सर्विस है httpd Amazon Linux रे अपाची सर्विस रो नाटा हला सर्विस नेम बा पैकेज नेम टा हला httpd ओके सो कोन कहला ना could not find this apache service could not find तुम्हारा एटा इंस्टॉलिंग हेनी राइट इंस्टॉलिंग हेनी तो इंस्टॉल करिवा पई लिनक्स मशीन रे apache server केमती इंस्टॉल हाउ टू इंस्टॉल apache server on a linux machine so it is very simple okay so what you have to do you have to just simple use sudo means super user do with super user privilege we are going to execute or install this service okay हमें यही apache service टाको हमें with highest privilege बा root privilege देगी हमें install करिवा right तो कौन करिवा मैं एठी लिखिबी sudo yum super user permissions देली तापर कौन yum हला linux machine रो package manager okay Amazon Linux रो package manager yum then install मतलब इंस्टॉल करियार अछि कोन इंस्टॉल करियार अछि ना apache server httpd तापर मु -y दे देली -y हला मु बिफोर एग्जीक्यूटिंग मु कोन करछि ना ताको परमिशंस दे दोछि जे माने अप्रूव करछि यस तमे इंस्टॉल करो जदि -yes एठी न दोछि देन हमहु मिडिल रे राइट इट विल आस्क फॉर approval like whether you want to proceed or not yes or no you have to give so better I'm going to give yes now itself so ए कौन करबा ना apache server गोटे इंस्टॉल हो जिवो राइट सी good so it is complete apache server installations complete okay so apache server installations complete हे गला now let's check system ctl status okay एबे जदि हम स्टेटस चेक करबा कोन कहूची से एक्टिव इनएक्टिव अछि राइट डेड ताको हमें स्टार्ट करबा देखो सेल प्रोग्रामिंग ता कोन एक्चुअली जे कोनसी कमांड हमें एग्जीक्यूट करछे मैनुअली ताको सिस्टमैटिकली गोटे फाइल भीतर रखी कि एग्जीक्यूट करबा राइट ए जो कमांड मु चेक करछि स्टेटस चेक करिया पई कार apache सर्वर तो एटा को ही मते शेल स्क्रिप्ट भीतर रखी कि एग्जीक्यूट करिया अछि ता भीतर कोन सब प्रोसेस फॉलो करिया अछि राइट हमर रिक्वायरमेंट को सेति पई गाइस मु सब बळे कुए हमें जहां भी करूछ ऑटोमेशंस इज नॉट सो इजी राइट first thing is you have to understand the requirement properly understand the manual process completely तमे यदि मैनुअल प्रोसेस ठीक से जानी न पारिबो मैनुअली एटा एग्जीक्यूट केमती करा जाय ता पय को कमांड यूज हुए देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू द फर्स्ट थिंग इज you should know how manually it can be executed तो apache सर्वर स्टेटस जाने पे हमें मैनुअली एटा जे कमांड यूज कर परिबा systemctl status httpd फाइन तो मते वर्तमान आपको स्टार्ट करियर अछि तो हम कोन को यूज करबी सुपर यूजर देकी स्टार्ट करबी सिस्टम ctl start httpd ओके स्टार्ट हे गला तापर एबे चेक करबी स्टेटस कोन होची एक्टिव रनिंग वर्तमान apache सर्वर हमरो रन होची सिंपल राइट apache सर्वर हमें इंस्टॉल कर देले नाउ लेट्स कम टू द शेल स्क्रिप्टिंग पार्ट हम शेल स्क्रिप्टिंग पार्ट को आसीबा तो हम कोन करे अछि फर्स्ट थिंग द स्टेटस ऑफ द सर्विस तामे जानिले को कमांड यूज करिवा स्टेटस चेक करिया पई systemctl status httpd राइट तो ए सब को मु कोन करी वर्तमान मते गोटे शेल स्क्रिप्ट भीतर लिखिबार अछि राइट लेट्स गो देयर
सपोज मैं ना देदेली service task.sh, something like this, service task.sh. Okay. बस राइट बिन बस बस प्रोग्राम मत लिखार अच्छी सो एबी कौन करार अच्छी मत फर्स्ट थिंग होची हमें स्टेटस चेक करबा तापे कौन कमांड सिस्टम ctl मैं लिखि पारिबी संस्कृत भीतर राइट स्टेटस httpd राइट तो बट एटी प्रॉब्लम कौन हो मु जदी डायरेक्टली सिस्टम ctl स्टेटस httpd देली देन कौन हो से जेमती हमें एटी एग्जीक्यूट करथले कमांड प्रॉम्प्ट रे सही टाइप रो ही एग्जीक्यूट होबो राइट सही टाइप रो ही एग्जीक्यूट होबो तो एटी हमें कौन करे लेट्स चेंज इट ch मोड मते कौन करे छै चेंज कर दो 755 service task.sh okay then execute this file okay एटी कौन कला सही एग्जैक्टली स्टेटस चेक कला राइट बट आमे डायरेक्ट कमांड दबा जगह मु कौन कली सेल स्क्रिप्ट भीतर रखि देली बट आमे सब कौन आकु नै कौन स्टेटस चेक करके आमे कौन करिया खाली जस्ट it is printing the status on the terminal आमु कौन दरकार स्टेटस रो रिजल्ट हिसाब रे हमको एक्शन नबार अछि राइट तो कौन करिया एबे लेट्स मॉडिफाई द स्क्रिप्ट ए हिसाब रे ए टाइप रो तुमको स्क्रिप्ट लिखिया पड़ियो राइट तुम फर्स्ट मैनुअली जानिबो को कमांड तुमको दरकार तो ए कमांड रो हमर आउटपुट केमती आसुची देखो ए कमांड रो आउटपुट केमती आसुची ए टाइप रो आसुची राइट तो मते को लाइन रे जान को लाइन ता दरकार तार स्टेटस चेक करबा पई को लाइन ता दरकार तार स्टेटस चेक करबा पई हम दरकार कोन एक्टिव ए लाइन ता पर्टिकुलर हमको दरकार राइट तो आउ गोटे कमांड अछि सर्विस कमांड हमें कोन यूज कर परिबो सर्विस httpd sorry service command supports only basic sorry httpd status okay status inside the status okay एटी भी सही एग्जैक्टली सेम दोज राइट तो हम कौन करियर अछि ए पर्टिकुलर लाइन टाको नवर अछि ए पर्टिकुलर लाइन रे हमर तार स्टेटस ता कौन जणा पडुची एक्टिव राइट तो लेट्स फिल्टर इट आउट मोर तो हमें कौन कमांड यूज करथले सिस्टम ctl status apache server service name right httpd sorry there is a spelling mistake system okay then further filter it out हमको लाइन ता दरकार एई पर्टिकुलर लाइन ता दरकार तब मु कोन फिल्टर करके नेबी कोन मते यूज करिया पड़ियो कोन फर्दर कमांड यूज करिया पड़ियो मते ई जदी पैटर्न टाको मते केवल देखियार अछि त मते कोन यूज करिया पड़ियो को कमांड सेटा को ही तुमको जानिबा को पड़ियो राइट तो आई हैव टू यूज grep कमांड राइट तो grep को पर्टिकुलर पैटर्न को नेले मते से लाइन ता आसीबो तो मु जदी आइदर रनिंग नेबी किबा एक्टिव नेबी देन ए पर्टिकुलर लाइन पळे आसीबो राइट जदी मु ए एक्टिव ता नेबी राइट तो मु कोन करछि न कंप्लीटली ए लाइन ता ए पर्टिकुलर वर्ड ता को नि जाउछ एक्टिव विथ कोलन राइट तो आ भीतर कोन करछि डबल कोट भीतर दे देली तो मते ए पैटर्न जो लाइन रे अछि से लाइन ता ही मते केवल डिस्प्ले करियो राइट सी एबे कोन हैला ए जदी केवल सिस्टम ctl स्टेटस देखौतली मते कोन कंप्लीट स्टेटस देखे देला राइट बुक मते एते सब दरकार नै मते दरकार केवल एग्जैक्टली तार वर्तमान स्टेटस ता कोन अछि ए लाइन ता ही दरकार ए लाइन ता मते मिली गला राइट अगेन ए लाइन रो सब जाक भी मते दरकार नै मते कोन दरकार केवल ए फील्ड ता दरकार एक्टिव अछि कि इनएक्टिव अछि एक्टिव अछि और तुम यदि चाहो ए फील्ड नवा पई भी देन इट्स ओके रनिंग और डेड तो मते दरबार अछि सपोज एक्टिव और इनएक्टिव तो मु एटा केमते नेबी जदी हम एटा देखिबी स्पेस हिसाब रे हमर स्पेस डेलिमिटर यूज हेकरी एटा सेपरेटेड अछि
तो मुझे awk कमांड यूज करी सेकेंड फील्ड को मुझे पारि awk कमांड यूज करी राइट तो मुझे कौन करी awk कमांड यूज करी awk sorry okay print printed dollar कौन सी $2 सपोज में देली सॉरी awk print $2 देखो ये कौन है रिजल्ट आसीगला एक्टिव आम पूरा सिंप्लीफाई कर देले राइट तो ये आम केतरा कमांड यूज कले तीनटा कमांड यूज कले ये आम राइट तो ये सब जाक आम कौन करिया हमर सेल स्क्रिप्ट भीतर ऐड करिया राइट केमती करियो सर्विस टास्क ए लाइन टाक हटै देली हे गेला कौन आम यूज कले systemctl status httpd तो ये कौन कला कंप्लीटली हमको एटा शो कर देला तार स्टेटस तादरा हमें ग्रेप यूज करी पर्टिकुलर लाइन को बाहर कले फर्स्ट तार पर्टिकुलर लाइन नहीं सरला पर पुनी awk कमांड यूज करी awk कमांड यूज करी हमें प्रिंट कले सेकंड फील्ड जोटा कि रिप्रेजेंट करूची द रियल स्टेटस ऑफ द सर्विस सो वी गॉट इट नाउ राइट तो आको भी जदी हमें पाई गले कौन करिवा हमर स्टेटस ता तो हमें पाई गले तापर आको हमें कंडीशंस रे पकेवा लेट्स एग्जीक्यूट इट तो हमें एग्जीक्यूट कले कौन देखो आर स्टेटस देखियो वर्तमान अपाची सर्वर स्टेटस है एक्टिव let me stop the apache servers again run this service we'll see what the result is displaying right so let me stop it what I'll do systemctl stop httpd stop कर दूची ठीक है सुनो ओके स्टॉप हो गला पर मु पुन तरह से सर्विस यूज कर देखो एबे कौन गला इनएक्टिव आम सेल स्क्रिप्ट कौन कर इनएक्टिव देखो जे अपाचे सर्विस पाई गले आमर जहा रिक्वायरमेंट ला फर्स्ट थिंग है चेक द स्टेटस ऑफ द सर्विस राइट स्टेटस चेक कर देले फर्स्ट थिंग गला इफ इट इज रनिंग देन टेक दिस एक्शन राइट तब हमें कौन है डिसीजन मेकिंग ऐड करिया कंडीशंस ऐड करिया इफ लिखिबे इफ कंडीशंस ऐड करिवा राइट लेट्स ऐड दिस वन तो कंडीशंस चेक करिया पाई मते डायरेक्ट आर आउटपुट को नेकरी करि परिबे मते कोन करिया अछि आकु गोटे वेरिएबल भीतर जदि मैं आकु डायरेक्ट नहीं कंडीशन में पके देन द कोड विल बी वेरी लेंथी बिग एजो तो किछि अपडेट और मॉडिफाई कला को टिके डिफिकल्ट आसीबो तो मु कोन करबी ना इठी फॉर कंप्लीट आउटपुट को कोन करछि ना गोटे वेरिएबल रे स्टोर कर देबी राइट लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल सपोज द वेरिएबल नाम मु देबी स्टेटस न दे हां स्टेटस था स्टेटस equal to status equal to then it will convert the entire command I have to keep in a backquote हमें जानी छे राइट हम जेतो प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम लिखले जे कोन सी कमांड एग्जीक्यूट करिया अछि वेरिएबल रे असाइन करिया अछि देन वी हैव टू राइट इन ए बैककोट राइट बैककोट भीतर देखि देले राइट तो कोन हो वर्तमान ई जो कमांड एग्जीक्यूट हो आरो आउटपुट टा स्टोर हे जो कोथरे स्टेटस रे आउटपुट टा स्टोर हे गलो स्टेटस रे तब ये जो स्टेटस को नाउ हमें कंडीशन रे पकेबा राइट तब रे कोन करियो लेट्स राइट द कंडीशंस if right if कंडीशंस चेक करिवा तापई तुम सब बळे मने रखिता हम जल्दी कहिछि जे कोनसी ऑपरेटर्स हमें देखितिले सब ऑपरेटर मन रखिया पड़िबो तुमको राइट तापर हम जो डिसीजंस मेकिंग रे जावी सब देखितिले से सिंटैक्स कंप्लीटली मने रखिया पड़िबो तुमको राइट तो एठी हम कोन करिया अछि ना चेक करिया अछि स्टेटस ऑफ दिस राइट तो फर्स्ट थिंग होछि चेक द स्टेटस डॉलर if डॉलर स्टेटस
ओके तो आम कौन करिया डबल कोट भीतर रखिया जेहेतु एटा गोटे स्ट्रिंग राइट बेटर हम डबल कोट भीतर रखिदेली इक्वल टू active okay if it is active then कंप्लीट एटा लिखि दउची तापर हम राइट जदि स्टेटस एक्टिव अछि एक्शन नवा पड़ियो राइट तमे कोन करबा को चाहू छ सपोज मैं एटी जस्ट गोटे एको लिखि दउची एको सर्वर is active save it let's check okay what is this missing payment okay तो missing कौन है let's check okay ये जो एरर टा कौन पे आसला कि कहि दबो ये कौन आसला मिसिंग देखो जे एरर टा ये जो एटी कोटी कौन छाड़ दी मु गोटे कहलो एरर दोची हम जान इफ कंडीशन रे जो ब्रैकेट हम यूज करू स्क्वायर ब्रैकेट बोथ साइड रे स्पेसेस थिबा दरकार एटी स्पेस थिबा दरकार अछि बट एठी हम स्पेस दबा भूल जाई छै राइट सेति पे एरर थ्रो करछि राइट तो हमको स्पेस एटी दबा सो ई सब तमरो जो एरर फाइंडिंग ता तमे जते माने प्रैक्टिस करिवो जते प्रैक्टिस करिवो ऑटोमेटिकली तमे जानि परिवो कोड प्रॉब्लम रहउछि ओके सेव इट नाउ एग्जीक्यूट अगेन गुड किसी डिस्प्ले कलानी व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ बर्तन प्रॉब्लम कौन है मुझे ठीक कौन कली इक्वल टू दे दीची राइट जोटा कि हमर हम जा eq दबा राइट लेट्स चेक विथ हाइफन eq हम कलानी काहे ना हाइफन eq हेलो इंटीजर एक्सप्रेशन जो चेक करिया ପାଇଁ राइट तो आमे कौन करू हमर जो कमांड थी एग्जैक्टली द सेम थिंग तो सब बेले मन रखी दो गाइस मैं हाइफन eq जते यूज करिवो सेते बेले कोडी जन बोथ साइड इंटीजर तमे जदी कंपेयर करूचो जदी स्ट्रिंग कंपेयर करूचो देन यू हैव टू गिव double equal symbol you have to give double equal symbol okay now save it execute किछि डिस्प्ले करूनी काहे की डिस्प्ले करूनी किछि ना सर्वर हमर कोन अछि स्टेटस ता कोन अछि इनएक्टिव अछि हमें एक्टिव सहित कंपेयर करूचे राइट तो मैं जदी सर्वर देखिबी नाउ मु एठी कोन करछि हम किछि जानि पारुनी एठी वेदर सर्वर एक्टिव कि नाही बोली राइट मु एबे देखि दउछि कोन else पके दबा else part right else equal else okay if रे पके दबा nested if करिया right else if status okay else if में हमर दुईटा ही कंडीशंस रहउची राइट else ना else if ही था राइट else if ही था देन हमें else if भीतर स्टेटस ता then okay echo एठी कोन करे else if हमें फर्स्ट देचे कोडी एक्टिव द सेकंड टाइम हमें कंपेयर करबा विथ inactive right inactive else if status is inactive echo server is inactive simple right let's save it execute from server is inactive तो हम this real check करिबा एठी system ctl status httpd एठी कोन कोछि inactive अछि
स्टेटस कौन इनएक्टिव अच्छी आम स्क्रिप्ट परफेक्ट काम कर बर्तमान राइट चेक कला सर्वर इनएक्टिव अच्छी आम पर्टिकुलर स्क्रिप्ट काम कला बट आम ये कौन कर खाली डिस्प्ले करुचे सर्वर इज एक्टिव सर्वर इज इनएक्टिव एठी आम कौन देथिले हमर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट करथिले आम स्टेटस चेक करदेले चेक द स्टेटस ऑफ द सर्विस इफ इट इज रनिंग then actions to be taken it will ask the user input whether to stop or terminate तो आप हमें कौन यूज करिबा को लॉजिक यूज करिबा आप हमें केस स्टेटमेंट इफ विदरे केस स्टेटमेंट ऐड करना राइट मेटी कौन करछि गोटे केस स्टेटमेंट लिखी ओके केस नहीं गली okay guess और केस न नहीं कि भी जदि हमें कौन नहीं जुआ okay fine action okay केस हमर केस रो सिंटैक्स कौन थिला केस हमें केमति लिखुतिले केस action in then we have to use something right case in हम जहाँ एक्शन नवा था नवा राइट तो हमें भी कौन करिबा सर्वर जदी एक्टिव अछि एक्शन नवा एक्शन इन राइट तो बट केस काम करिवो नै बेटा हम देखु छी तो एबे केस काम करिवो ना नहीं हमर कोन अछि एठी स्टेटस नै गला एक्टिव जदी स्टेटस एक्टिव अछि से हमको पचारिबा कथा जे स्टॉप अच्छी स्टॉप करिवो कि ऐड करिवो ओके फाइन तो एठी हमें कौन करिबा केस एठी एक्चुअली काम करिवोनी जदि हमें मल्टीपल आउटपुट ही था ना मल्टीपल रिजल्ट आस्ता देन हमें केस यूज कर पारथां राइट तो एठी हमें कौन करिबा ना सिंपल वेर हमें यूज करिबा दे इनपुट रीड नेकरी इनपुट यूज करिबा ओके रीड नेकरी इनपुट यूज करिबा ओके तो मैं कौन कौची एको राइट एंटर select appropriate action select appropriate action okay तो appropriate actions रे कौन रोची फर्स्ट थिंग हला कौन रखिया हमें दे दोली देखो तो जस्ट डिस्प्ले करिया पे वन मारले हमर टॉप हबो देखो टू मारले हमर सपोज टर्मिनेट हबो ओके तो मेटी कौन कली रीड एक्शन नहीं सेठी हमको मागियो राइट सिलेक्ट अप्रोप्रिएट एक्शंस कौन करी स्टॉप की टर्मिनेट वन मारले स्टॉप टू मारले टर्मिनेट तो आम ये कौन करबा एक्शंस इन सॉरी नॉट ही एक्शन रीड एक्शन नहीं गला तापरे हमें एठी केस स्टेटमेंट लिखिबा ये एठी हमें केस स्टेटमेंट लिखिया जेतो दुईटा इनपुट हमें दे पारिबा राइट तो मैं एक्शन नेली रीड एक्शन हमें जोटा एक्शंस दबा सही हिसाब रे जो इनपुट दबा से इनपुट हिसाब रे काम करबो राइट एठी मु वर्तमान केस लिखिबी केस डॉलर एक्शन इन राइट तापर कोन अछि तार सिंटैक्स केस तापर केस जो पर्टिकुलर एक्शंस हमें दबा राइट वन मु एठी कोन करबी हमर कोन करे अछि फर्स्ट ना स्टॉप यदि फर्स्ट वन सिलेक्ट कला देन इट शुड बी स्टॉप देन मु कोन करछि
लिखि दोछि system ctl, right, stop http, but it should be executed as super user do जदि 1 हला तो मत हमको execute करिया अछि, right, then it should end with double semicolon double semicolon हमर end हला, right, तो जदि मु 1 select कली stop होबो, again मु जदि 2 select कली कोन होबो terminate होबो, ता पय terminate पय हम पुनी कोड लिखिया पड़े, तो केमिति terminate होबो, तो terminate करिया पय हमें तार pid बाहर करिवा, pid बाहर करी किल करिवा, राइट, तो मैं कौन कर बर्तमान सिचुएशन सेटा पीआईडी बाहर करी किल करिवा हमें नेक्स्ट ईयर बाहर करी माने जोड़ा सेकंड ऑप्शन सेटा हमें चूज कर चली एटा सरीला पर ए पर्टिकुलर एक्शन से लिखि सला में टर्मिनेट ऊपर काम करिया, राइट, तो मैं सिंपल कौन करछि ना एक को गोटे लिखि दोछि टर्मिनेट द प्रोसेस बा सर्विस सिंपल लिखि दोछि डन हे गला, जदि एक्टिव अछि हमें कौन कले स्टॉप आउट टर्मिनेट करे, तो सेम थिंग हमें कोठे ऐड करिवा जदि इनएक्टिव अछि तो इनएक्टिव अछि जदि हमें कौन करे केवल अछि हमर स्टार्ट करिवा, राइट, तो एठी हमकु आउटिके कमी जीवो एते सब स्टेटमेंट लिखे जेतु हमें दुईटा ऑप्शंस दउतले तो दुईटा ऑप्शंस को गोटे केस स्टेटमेंट रे ऐड करी देखो जो लॉजिक ता तमे ऐड करछो, राइट, तमे जे पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग जानी छ, राइट, केमती प्रोग्रामिंग करा जाए तो मल्टीपल वे रे मल्टीपल थिंकिंग रे तमे एटा करि परिबो, राइट, तो वर्तमान हम कोन करबा एटा स्टेटस इज एक्टिव हे गेला, देन एबे मु कोन करछि ना इनएक्टिव ऊपर काम करी, इनएक्टिव कोन करछि जदि स्टेटस हमर कोन थिला हमर रिक्वायरमेंट कोन अछि जदि स्टार्ट इफ नॉट रनिंग देन एक्शन टू बी टेकन इज स्टार्ट द सर्विस, तो आपे हमर केस दरकार नै कारण गोटी ही केवल स्टार्ट करियर अछि, तो मु एटी देन स्टार्ट द सर्विस, राइट, स्टार्ट सर्विस करियर अछि तापे कोन करे अछि डायरेक्ट कमांड मु लिखि देबी sudo system ctl start http डन, तापे हमर किछि अब दरकार नै कारण सर्वर इज इनएक्टिव, एठी तमे जदि चाहू छ स्टार्ट करिबा पई, ओके, तो मु एठी ओडा ओडी किछि लिखि परिबी जेमति एको you want to start the service yes or no, एठी दुईटा ऑप्शंस आउट देयर ऐड करिकि दुईटा ऑप्शन ऐड करिकि मोटी केस भी लिखि परिबी, राइट, तो से ऑप्शंस लिखिबा देन मु कोन करछि जेतु हमें एठी एल्स इफ यूज करले, राइट, तो हमर सिंटैक्स कोन होछि एल्स इफ रो नेस्टेड इफ रो सिंटैक्स कोन होछि नेस्टेड इफ रो होछि if elif then if elif else and then it should be ended with fee, okay, so okay last class हम डिस्कशन करथलेगा, तो वर्तमान देखि हम कोन करिए द कंडीशंस नेस्टेड इफ रे कोन होछि फर्स्ट होछि if then okay elif conditions check then जा राइट करे कथा देखिबो, राइट, हमरे उठी देन जा राइट करे कथा लिखलो तापर हमर एल्स रहिबो then it should end with fee, एटा हला तार सिंटैक्स ता, बट एठी हमें कोन करछे if यूज कले देन इस पार्ट ता हम कवर कले else if पार्ट ता कवर करछे, बट हमें else पार्ट ता लिखिने सेति पई यार कलर देखनो कलर केमती चेंज हो जाइछ, राइट, एठी कलर सब चेंज हो जाइछ, राइट, तो मैं एठी कोन करछि else ऐड कर दोछि, if then elif status check then do, तो एठी आ गोटे प्रॉब्लम कोन होछि कोन पई एठी मु एक्चुअली
एठू आमे देखो केस स्टेटमेंट तो आमे लिखि देले बट केस ता आमे कोन कंप्लीट करी नै आमे केस स्टेटमेंट को अधा ही छाड़ी देचे आमे तापर इनएक्टिव पळे आसले केस रो कोन अछि केस रो स्टार्ट करिवा ताको एंड केमति करिवा आमे यूज करिकि ई सेट राइट तार स्टेटमेंट कोन थिला केस रो सिंटैक्स थिला केस राइट केस रो सिंटैक्स थिला केस वेरिएबल जा दिला इन राइट तापर कंप्लीट विथ एंड विथ ईसैक आमे एटी ईसैक देइनी तो सेति पई प्रॉब्लम दोची ईसैक देखो एंड कर देली देन प्रॉपर सिंटैक्स आसी गला पर कलर चेंज हे गला राइट फाइन तमे ओबे केस स्टार्ट कले ईसैक रे एंड कले राइट तापर एटी भी आमे मु चाहि जदी apart from 1 and 2 ए दुईटा स्टॉप और टर्मिनेट हिसाब रे जदी यूजर अलगा किछि प्रिंट कला देन इट शुड गिव अस a different message तो मैं एटी कोन करबी एटी मु कोन कर देबी स्टार apart from 1 and 2 if anything else then it should display a different message right eko please enter appropriate option one stop true for perfect मु मेसेज ता दे देली प्लीज एंटर अप्रोप्रिएट ऑप्शन 1 फॉर स्टॉप 2 फॉर टर्मिनेट रहगला तापर एठी हमर जो सेकंड पार्ट इनएक्टिव रे काम करछे तो मु कोन कली मेसेज कली डू यू वांट टू स्टार्ट द सर्विस हमरो नॉर्मल आसीबो मानो यस और नो तो मैं एठी कोन करछि यूजर इनपुट दीटा नै जेबी एको नॉट एको मु कोन कली ओके एको या फिर what I can do I can just use yes or no 18 मते दे देबी मैं राइट yes or no ओके तो आउ कोन हम कर परबी नले सिंपल दे देबी why or no राइट yes or no राइट yes or no यूज करिया पे सिंपल यूज करियो बा सिंपली लिखि दोछि यस और नो तो मैं ठीक काम करबी रीड ओके रीड लिखि दोछि देन रेस्पॉन्स कोन आसिला एटी केस लिखि देली केस आरो रेस्पॉन्स कोन आसिबो रेस्पॉन्स इन राइट फर्स्ट हमको नॉर्मल कोडिंग प्रैक्टिस हला जते बेले तमे किछि भी गोटे सिंटैक्स पे स्टार्ट करछो ताको एंड करिवो प्रॉपर्ली जेमति कि हमें एठी कोन केस रे स्टार्ट करतले बट एंड करि नतले भूली जायतले बाकी काम बाकी प्रोग्राम स्टार्ट कर देतले तो एठी किछि गोटे एरर आसुतला राइट माने किछि गोटे डिस्प्ले डिफरेंट आसुतला तो सब बेले द प्रोग्रामिंग बा कोडिंग प्रैक्टिस हला जहां भी तमे स्टार्ट कर तो एंड कर दो ता भीतर जहां कोड लिखिबा कथा लिखिबो तो बर्तमान मु कोन करबी आपको एंड कर देली इसाक पार्ट काम सरी गेला तो बर्तमान मु कते कोन करे अछि मते एठी बाकी सब प्रोग्राम यूज प्रोग्राम लिखि कोन तो जदी रेस्पॉन्स यस बा नो हैला देन मते एक्शंस नंबर अछि राइट तो मु कोन कली यस जदी जने टाइप कला तो मैं एठी कोन करी आपको डबल कोट रे भीतर रखी जेतो एटा स्ट्रिंग ओके यस देन मते कोन करियर अछि एटा को माने कोन अछि स्टार्ट करियर अछि डू यू वांट टू स्टार्ट द सर्विस यस देन तो स्टार्ट करियर अछि सर्विस स्टार्ट हे गला राइट तापर ए लाइन ता मते दरकार नै राइट तापर जदी कोन अछि नो कैपिटल एन ओ एग्जैक्टली सेम प्रिंट कले ही काम करिवो नो तो जदी नो तले देखो जस्ट व्हाट प्रिंट कर दोची योर सर्विस you decided not to start the service perfect simple message गोटे दे देली तापरे आ गोटे मु लिखि दोची ओके आपको एंड करिया राइट मु तो स्टार्ट कर देली
ताकू मते एंड करार अछि विथ डबल सेमीकोलन तापरे कोन करार अछि स्टार अपार्ट फ्रॉम ऑल स्टार दे देली तो स्टार जदि मते किछि एग्जीक्यूट करार अछि तो केमति एग्जीक्यूट करबी तो मु कोन करली एठी दे देली एको इस एंटर ओके एठी कोन अछि ना मु स्टार भी एंड करिनी डबल सेमीकोलन रे राइट एटी द एरो एंड एटी डबल सेमीकोलन मु स्टॉप करनथि ठीक अछि कि कर देली फर्स्टली प्लीज एठी कोन देले प्लीज एंटर yes or no please enter yes or no बस सरला and then तम प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गला बस ये टर्मिनेट पार्ट को छाड़ी के टर्मिनेट पार्ट पे हमें कोड लिखिबा अलग केमती टर्मिनेट कर परिबा राइट तो वर्तमान हमरो कोड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड तो हमको वर्तमान एटी एग्जीक्यूट करिया पड़ियो कोड जहां भी कोड वर्तमान हमें लिखले तक हमें एग्जीक्यूट करबा लेट्स सी तो फर्स्ट थिंग है हमें स्टेटस चेक कले तार स्टेटस कोन अछि बेस्ड ऑन द स्टेटस जदी एक्टिव अछि तमे चाहू जदी स्टॉप की टर्मिनेट तम हिसाब तम रिक्वायरमेंट तम अलगा किछि भी ऐड करि परिबो राइट स्टॉप की टर्मिनेट रीड एक्शंस एक्शन हम जहां इनपुट दबो यूजर इनपुट दबो सही हिसाब रे केस रे से एक्शन नबो राइट लेट्स सी वर्तमान हमरो चेक करिबा मु सेव कर देली लेट्स एग्जीक्यूट जदी भी किछ एरर थियो त फिक्स करिया syntax error near unexpected token fee let's see what is the syntax error we got the syntax error else अच्छा else पर हमें किछि लेखी नै राइट एटी हमें छाडी देले हमें ए पार्ट ता काम कर देले बट ए पार्ट छाडी देले राइट तो एटी हमें लिखि दबा किछि एको एको like first thing first I'm check करछ active inactive then just more a message कर देछ not sure about the status okay apart from active inactive thibo then ये message करे मु जानि कोन का status not sure about the status simple right okay done now let's execute it perfect हम स्क्रिप्ट काम कला तो ये जो छोटो मोटो एरर राइट तमे जेतबे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करिवो त डिबगिंग करिया पई राइट किछि एरर आसला त फिक्स करिवो राइट एज ए डेवलपर तमे गोटे कोड लिखुचो राइट किछि भी इशू आसिला तमे निजे ही तमे ताको फिक्स करिवो तो हमें एटी फिक्स करिया तो एटी कोन देला सर्वर इज इनएक्टिव do you want to start the service मुझे दी एटी नो देबी you decided not to start the service start हेलानी राइट पुनी रन करी you want to start the service again पचाला जेतु सर्विस इनएक्टिव अछि मु एटी धर अलगा किछि मार देली एटी कोन देला प्लीज एंटर यस नो ओके पुनी रन करछु मेटाକୁ एटी मु जदी यस देबी से कोन करिवो सर्वर को स्टार्ट करिवो राइट यस मार देली त माने हमर सर्वर स्टार्ट हे गेला एबे स्टेटस पुनी रन करबी स्क्रिप्ट देखो सर्वर इज एक्टिव हमें दी लास्ट रे स्टार्ट कर दिले राइट एक्टिव हे गेला तो एटी हमर ऑप्शंस दोजी आइदर वांट टू टर्म सिलेक्ट एप्रोप्रिएट एक्शन स्टॉप और टर्मिनेट तो मु एटी जदी टू प्रेस करिवि राइट तो एटी कोन आसीबो टर्मिनेट द सर्विस जोटे हम जस्ट मेसेज गोटे प्रिंट करथि तापे इच कमांड लिखिने तो मेटी दी स्टॉप करिवि कोन लेट्स एग्जीक्यूट द सिम वन स्टॉप हे गेला राइट पुनी रन करिवि एग्जीक्यूट करिवि एटाକୁ सर्विस इज इनएक्टिव जेतु हम एटे स्टॉप कर देथिले राइट सर्विस अब इनएक्टिव हे गेल एठी पुनी पचारछि तमे स्टार्ट करिवे कि स्टॉप करिवो यस स्टार्ट हे गेला राइट एमती एई वे रे एग्जैक्टली तमे तमर कोड लिखिबो तापरे एटा गोटे वे रे बा सिंपलेस्ट वे रे मु तमर कोड लिखि तम बतै दिली तमे चाहबे दी अलगा वे रे भी अलगा मॉडिफाई करी अलगा डिजाइन कर तमे कोड लिखिबो देन यू कैन राइट द कोड आल्सो ओके बट तुमको जानि बार अछि कोन कमांड यूज करिया अछि केमती तमे कोड को मॉडिफाई करि परिबो राइट तामे वर्तमान नॉर्मल स्टॉप स्टार्ट सर्विस स्टेटस चेक जानि गले टर्मिनेट पार्ट रे काम करिया केमती टर्मिनेट करिया राइट तो
सर्विस हमर स्टार्ट हेगला मु जदी भी आउ थे रन करछि पुनी पचाउछि स्टॉप और टर्मिनेट कारण मु पुनी इज लास्ट क्लास पुनी स्टार्ट कर देथि यस करिकरी तो मैं जी एक दुई जगह जदी तीन प्रेस करबी कोन हो प्लीज एंटर appropriate options 1 for stop 2 for terminate right now let's move into the terminate part okay so terminate part केमति काम करिवे एठी कोन कला आमे टर्मिनेट रे कौन करिवे जो सर्विस टा रन होची ताको स्टॉप बा स्टार्ट न करे बेले बेले कौन काहे की टर्मिनेट हमें एक्चुअली करबे काहे की गोटे प्रोसेस को किल करबा ना जेते बेले गोटे प्रोसेस abnormal बिहेव करूची हमें ताको स्टॉप भी करि पारुनी राइट हमें से सर्विस टा को स्टॉप भी करि पारुनी देन व्हाट वी हैव टू फोर्सफुली किल दैट सर्विस तो टर्मिनेट करिया अछि जो सर्विस टा रन होची ताको हमें टर्मिनेट करिया अछि राइट तो बेसिकली प्रोडक्शन सपोर्ट पिला इजिली बुझी पारिबे टर्मिनेट काहे करा हुए केतबेले करिवो को सिचुएशन रे करिवो को इशू असले करिवो से मानकर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करथिबे राइट तो हमें एठी कोन करे टर्मिनेट करिवे तो टर्मिनेट करिया कोन अछि हमें हाउ टू टर्मिनेट ए सर्विस और किल ए सर्विस either we can stop or only one thing is if we do stop then it will stop the service the process will be vanished but if stop also not working if stop also not working then you have to forcefully terminate or forcefully kill that time what you need you have to check for the process id गोटे application रो गोटे सर्विस रो बा गोटे प्रोसेस आईडी हमकु नै कि किल करिया पड़िबो राइट तो मते बे कोन करिया अछि प्रोसेस आईडी बर्तन खोजर अछि तो प्रोसेस आईडी चेक करे पई कमांड कोन तो कमांड हला लाइक ps command so we have to go with ps command so ps command हमें चेक करिबा तो फर्स्ट ps command हमें कोन देखिबे लेट्स गो विथ ps command ps hyphen ef right माले हमें कोन कंप्लीट एंटायर प्रोसेस शो कर दबो तो वर्तमान मते कोन अछि देखियार अछि अपाची प्रोसेस तो ग्रैब करबे एठी httpd बहुत सारा अपाची प्रोसेस आसी गला राइट तो बेसिकली को प्रोसेस टा अपाची सर्वर हमें को जानिबार पड़ियो तो एठी तमे तदे देखिबो कांस्टेंटली 220 22505 जोटा कि हमर प्रोसेस टा हमें कोठी रूट यूजर रे ही स्टार्ट हितला रूट यूजर ही स्टार्ट हितला एटा तो किल तमे केतबेले करबे जेतबेले तमर स्टॉप काम न करूनी माने तमर एप्लीकेशन स्टॉप हे जाची हैंग हे जाची किछि रेस्पोंड करूनी देन तमे ए मेथड यूज करबो टू टर्मिनेट इट देयर इज आल्सो ए चैलेंज राइट तो द टर्मिनेट तमे सेमती डायरेक्टली किछि एप्लीकेशन प्रोसेस टर्मिनेट करि परिबनी किछि डाटाबेस एप्लीकेशंस तमे डायरेक्टली टर्मिनेट करि परिबनी पूरा ट्रबल शूट वेरीफाई बैकअप सब नहीं सारला परे जाइकरी प्रॉपर वे रे तुमको टर्मिनेट करिया पड़िबो किछि एप्लीकेशंस अछि जंती अपाची सर्वर हमें सिंपल गुड एप्लीकेशन सर्वर हमें समटाइम्स एटी भी प्रॉब्लम दबो प्रॉपर रेस्पोंड करिवनी राइट तो बर्तमान कोन अछि ना जेतु हमें स्टार्ट करतला हम सर्विस को उतरे यूजर थला रूट यूजर तो हम कोन करे अछि ए अपाची सर्वर प्रोसेस आईडी टा हमको ए आईडी टा को हमको कैप्चर करिया अछि ए आईडी को हमर कैप्चर करिया अछि अगेन से प्रोसेस फॉलो करिवा ग्रैब कर दली राइट अपाची सर्वर तापरे मु कोन करबी आ गोटे ग्रैब करबी अपाची सर्वर एते सारा देखेला मते एते सारा दरकार नै मते गोटे लाइन दरकार केवल ए रूट लाइन जोथि रूट अछि पुनी ग्रैब यूज करबी ग्रैब जोथि हमर रूट अच्छी राइट एटी मु डबल कोड भीतर लिखि दोची प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द कोड देन एबे कोन हम सिंगल लाइन पळे आसला रूट मते सेकंड फील्ड दरकार अछि मते पुणी एबे कोन यूज करबी ऑक यूज करली राइट प्रिंट डॉलर टू सेकंड फील्ड हिट एंटर हमर कोन आसला एग्जैक्टली द पीआईडी पळे आसला exactly the PID then ये PID यूज करे पे किल करे पे मते कोन कमांड यूज करबी किल
-9 for the forcefully kill करियर अछि, राइट? kill -9 then PID then it terminate हे जो। तो ता पई किल करबा पई गोटे प्रोसेस को हमें फर्स्ट तार प्रोसेस आईडी हमको बाहर करिया पड़ियो, then we can terminate it, right? So मते एटा कमांड दरकार फर्स्ट, तो मु कोन करबी से सबस्क्रिप्ट भितर यूज कर दोची vi ओके। जो टर्मिनेट पार्टा रहिला हमर ये टर्मिनेट पार्ट को मु कोन करची एठी कोन करबी ओके लेट्स टर्मिनेट इट। तो मते ए सेकंड ऑप्शन रे मते कमांड हमर एग्जीक्यूट करियर अछि, राइट? तो कमांड को मु पेस्ट कर देली, ए कमांड ही बट ए कमांड जब एग्जीक्यूट हो खाली हमको कोन पीआईडी शो करिवो, बट हमको कोन करे से तार वैल्यू जोटा डिस्प्ले करो ता गुडे वेरिएबल रे स्टोर कर दोची, ठीक अछि? तो कोन करबी सपोज ता नाम दे दोची पीआईडी दे देली, प्रोसेस आईडी पीआईडी दे देली, ओके? और सर्विस पीआईडी गोटे नाम दे देली एसपीआईडी, गोटे वेरिएबल नाम दे देली एसपीआईडी। आ आपको बैककोड भीतर मते रखिया पड़ियो कारण पूरा कमांड ता मते एग्जीक्यूट करिकि तार वैल्यू को मते स्टोर करिया अछि वेरिएबल रे, वेरिएबल स्टोर हे गला, राइट? तो वेरिएबल स्टोर हे गला पर ए वेरिएबल रे कोन वर्तमान अछि हमर पीआईडी टा, ए पीआईडी को हमको टर्मिनेट करिया अछि। ता पे कोन हम यूज करिया टर्मिनेट करिया पे कोन कमांड यूज करिया, सॉरी टर्मिनेट करिया पे कोन कमांड यूज करिया हमें किल कमांड, राइट? तो मते दी किल कमांड यूज करबी, किल किल -9 कौन किल करबी ना जो पीआईडी टा बाहरला से पीआईडी टा किल करबी, राइट? देन बट एसपीआईडी ओके $एसपीआईडी तबे आता मैं कौन करबे डबल सेमीकोलन दे एंड कर दबा। बर्तमान एति की कोड मते कोन सेकंड ऑप्शन भीतर रखिली, राइट? कौन कला फर्स्ट गोटे पीआईडी कला, पीआईडी बाहर करी ताको हमें किल करूचे, राइट? पीआईडी बाहर करी हमें एटी भूल अछि नॉट डबल कोड, अरे ओके बुझी पहले। तो मते ए पीआईडी टा सर्विस पीआईडी जोटा बाहर तो किल करियर अछि, राइट? तो एठी आउ गोटे प्रॉब्लम कोन आसी जदी सर्विस रन होउची हम टर्मिनेट कर दबा, राइट? जदी रन न होतिबो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी यही आसीबनी तो किसी प्रॉब्लम ही नाही। जदी बेसिकली कोन होची हमें ये ऑप्शन टा जदी सर्विस रन होउतिबो हो नथिबो हमें एग्जीक्यूट कल कोन ये प्रोसेस आईडी ही पाइबनी, राइट? तापे हमें अलगा कंडीशंस लिखि तांते, बट हमर ए कंडीशन ही मूलरु ही सैटिस्फाइड हे जाई छि एठी कारण सर्विस एक्टिव थिले ही ए ऑप्शन हमको आसीबो, राइट? देन वी आर वेरी मच परफेक्ट, राइट? नाउ लेट्स गो आइट लिखि देले हमर कोड जानि देले कोन करिया टर्मिनेट करिया पे कोन लिखला केमथि पर्टिकुलर कोड देखो वर्तमान हमें vi टास्क तो हमर कोड वर्तमान केते लाइन हेला 34 34 35 लाइन्स तो कोड हेला एते हिसाब कोड हम लिखि देले 34 लाइन्स कोड, राइट? तो सब कोड को तमे जानियो पड़ियो, तमे कंप्लीटली जानि पालो, राइट? हम केमिति कोन कोड लिखिबा किछि भी टास्क अछि बा किछि भी रिक्वायरमेंट अछि त केमिति सबस्क्रिप्ट लिखिबा, राइट? कंप्लीट सेल प्रोग्राम सरला हमर तो मैं एग्जीक्यूट करबी हेले लेट्स एग्जीक्यूट इट सर्विस टास्क लिखलाटी कोन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट एक्शन सर्वर इज एक्टिव सर्वर हमर रन होची किछि भी इशू असला देन मते सपोज टर्मिनेट करे अछि मु दुई प्रेस कली, राइट? ओके एटी कोन देला किल ऑपरेशन इज नॉट परमिटेड, ये कहबो काई एटी देला किल ऑपरेशन इज नॉट परमिटेड it's because that id process id is being run by the root and we are terminating with the simple normal user ec2 user, that's why permission the operation not permitted। तो बर्तमान मते कोन चेंजेस करियर अछि ना मु कोन करना ताको सुपर यूजर दे देबी बर्तमान, राइट? से जगह मु कोन करबी बर्तमान sudo कर देबी
सेठी मते सुपर यूजर मु यूज कर दूं सुपर यूजर डू सुडो किल हाइफेन माने रूट हेकि ताको किल करियो राइट I'll save it, right? So what I'm going to do now, let's kill it, right? Execute the script again, then terminate. Okay, terminate the service. जदि आमे एबे अपाची सर्वर चेक करिवा पुन तरह से स्क्रिप्ट रन करिवा कौन देखियो एबे inactive, not sure about the status. कौन कला not sure about the status. कौन पाई ना आमे तार से जेतु एटा टर्मिनेट कर देछि बर्तमान रे तार स्टेटस टा शो करूनी the status टा बर्तमान शो करूनी. Let's execute this one again. Not sure about the status. तामाने हम जेतो सेल स्क्रिप्ट को जिबा एठी कोन हैला if condition माने तारा स्टेटस बर्तमान ना एक्टिव अछि ना इनएक्टिव अछि फॉलो ला कोठी हमर else statement not sure about the status, right? काम कलानी. Let's check manually. System ctl status httpd sorry system ctl status देखो एटी गोटे अलगा आसीगला फेल्ड जेतु आमे सिग्नल कोन टर्मिनेट कर देले कोड इज किल्ड फोर्सफुली किल कर देले राइट सेति पे एटी गोटे नुवा ऑप्शंस आसीगला फेल्ड ठीक तो एक केस रे तमे कोन करिवो यदि चाहिबो आ गोटे किछ लिखिबा पे देन यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन if the status is failed but action need to be taken. This task is and I'm just giving to you to do that. तुमको दिया ला टास्क टा तमे नेक्स्ट क्लास रे मते या फिर केबे भी करी मते देखै दबो ठीक अछि. तो वर्तमान मु कोन करछि फेल्ड अछि मु ताको मैनुअली स्टार्ट कर दोछि system start http फेल हे जाइछि मु किल कर देथिली मैनुअली राइट sudo स्टार्ट हे गेला एबे स्टेटस चेक करिवा रनिंग एबे हमें कोड रन कले देखेबो कोन एक्शन तमे नबो राइट मन रखिदा तमे जे फोर्सफुली किल करछ एटी फेल्ड स्टेटस को पळौछि एटी फेल्ड स्टेटस को पळौछि राइट फेल्ड स्टेटस पई तम टास्क दली क्लास कर बा तमे मते करी देखि पारियो फेल्ड पई गोटे कंडीशंस दबो जदि फेल्ड अछि ताको तमे चाहो स्टार्ट करिया पई देन हाउ टू स्टार्ट इट करी कि मते देखेबो राइट. Okay, guys, that's all for today's class. I think हमें बहुत किछ प्रोग्रामिंग जानी गले. The entire script हम देखेबी हमर वर्तमान 32 40 34 लाइंस रो स्क्रिप्ट हे गेला. तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्क्रिप्ट में जानी पाला रे केमति स्क्रिप्ट लिखिबो गोटे केमति स्क्रिप्ट लिखा हुए फर्स्ट थिंग गोटे प्रोग्राम करिया आगु तबे जानिबो त तमरो रिक्वायरमेंट कोन फर्स्ट गोटे नोटपैड रे राइट डाउन कर दब सब किछि तापरे से पर्टिकुलर कमांड से पर्टिकुलर एग्जैक्ट आंसर तो पाइबा पाई बस से पर्टिकुलर डिटेल्स तो पाइबा हम कोन ए कमांड यूज करिया पड़िबो राइट देन कर सारा पर राइट द प्रोग्राम इन सिस्टमैटिक वे. ओके दैट्स ऑल गाइस सी यू बाय बाय. मैं कोड भी तुम सहित शेयर कर दोची यूज करियो. चलो बाय बाय. ओके फाइन चलो.